Good morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the line by line explanation for the lesson Pita ka Patra, Putri ke Naam. Lesson number 10, class 7 from the book Vibhav Hindi Patmala. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for learning, please do click the like button. Your subscription like will motivate me to add more videos. So before getting into the explanation, let's see the introduction which is given in the book. Part Purva, Patra Likhna ek kala hai. So this lesson is a letter. So letter writing is one kind of art. बड़े बड़े महापुरुषों के पत्र साधारण पत्र नहीं होते. The great people or letters are not just normal letter. उनमें कई ऐसी जानकारियाँ होती थी जिन्हें पढ़कर आज भी हमें लाभ होता है. So in those letters we can get many information. By reading those letters we can become beneficial. We can get more details from those letters. Email क्या है बताइए. Do you know what is email? Can you put in the comment section what is email? Email is electronic mail. The mail which is sent through internet, right? Through internet the message is sent, and this is a very modern technology that is used in the communication field, and we can receive the details very easily and we can give the information within few seconds. Have you ever used email, children? Do you have an email ID for yourself? So you can write in the space provided what is email. Email is an electronic mail. Through internet the information is passed, and it is a modern technology, and with very easily we can pass on the information. ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने का एक आधुनिक तरीका है. इसके द्वारा हम बहुत जल्दी किसी को पत्र सूचना भेज सकते हैं. पत्र लेखन आजकल कम क्यों होता जा रहा है? Why do you feel that the letter writing is reducing nowadays? क्या वास्तव में पत्र लेखन कला समाप्त हो सकती है? Is really the letter writing art can be ended? Will it not be used at all? What do you feel? So today's life, the patra lekhan, the letter writing has reduced, yes, because people are using WhatsApp, mobile, email and social media to pass on the information, right? Where they get the information at once. People are forgetting to write letter writing because of lack of time, and even the technology is not modern and it takes many days to pass on the information. But if you see, patra lekhan kala vandu complete samaptala agadu, endala agadu, because it has some lively experience when you read a letter, right? When you see a greeting card, e-greeting card or a greeting card which is sent via post has a different feel. Emotions ka gya cho at least the letter writing will not end at all, because it expresses the thoughts, it expresses our emotions in a very beautiful way. And patra lekhan has reduced because of the usage of mobile, WhatsApp, email and social media, because through the technology we are able to send the message very quickly. Lack of time, and because of the technology which it holds, the letter writing people have forgotten. They don't find time to write the letter, or the technology is also not modern, which enables the information to reach very easily, very quickly. Hence people are forgetting to use letter writing. But letter writing will not end because it gives the emotions in a lively form. So सजीव रूप से ரொம்ப lively formula हमलोட emotions express पண்றதுக்கு letter writing is the best one. So that is one of the beautiful form. So the letter writing will not end at all. If you see, some of the other informations which is connected emotionally will be sent through handwritten only. This information you can write in your book. आजकल पत्र लेखन कम होता जा रहा है क्योंकि लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत संदेश भेज देते हैं. समय की कमी और तकनीकी की सुविधा के कारण लोग पत्र लिखना भूलते जा रहे हैं. लेकिन पत्र लेखन कला कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारी भावनाओं को सजीव रूप में व्यक्त करने की सुंदर विधा है. So whatever I have underlined is the keywords. इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के पत्र पढ़कर हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है और उनमें हमें क्या लाभ हो सकता है? सो इतिहास प्रसिद्ध मीन्स द हिस्ट्री फेमस आर पीपलोட லெட்டர்ஸை படிக்கும் போது what are the informations we can gather from those letters and how beneficial it is.
when you're reading a letter written by very famous people from the history, you can understand what the thought process was, what was the struggle they were handling, how the lifestyle was, so how the situation was at that time. So all those details we can gather. So by reading those letters, we will get motivated, right? We can gather few information from those letters and we can adapt in our lifestyle. Their experience will make us to understand things more clear and we can also learn things very easily, isn't it? इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के पत्रों से हमें उनके विचार, the thoughts, the struggle, the lifestyle and how the situations were during that time. We can get all those details. When you're reading those letters, you will be motivated. प्रेरणा प्राप्त करते means you will get motivation and also life you can learn few good values and you can implement those good values from those letters. अच्छे आदर्श ना लल्ला values, moral values, life values you can learn and you can implement. When you are implementing that, your life will be better. इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के पत्रों से हमें उनके विचार, संघर्ष, जीवन दर्शन और समय की परिस्थितियों की जानकारी मिलती है. इन पत्रों को पढ़कर हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं और जीवन में अच्छे आदर्शों को अपनाने की सीख मिलती है. There is a Chinese proverb, when you are in the anger, you should not write letter to anyone. So जब आप बहुत गुस्से में हो तो किसी को पत्र लिखने की गलती ना करें. Don't make the mistake of writing a letter to someone when you are in anger state. Now what this lesson is all about. So this lesson is the letter which is written by Jawaharlal Nehru to his daughter Indira. So जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा पत्र, पिता का पत्र पुत्री के नाम, जिसे उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था. We are going to read a part of that letter as a lesson here. Okay. Who is Jawaharlal Nehru? He is our first Prime Minister. He is Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, and by profession he is a lawyer. He was born on 14th November 1889 and died on 27th May 1964. And she is Indira Gandhi, daughter of Pandit Jawaharlal Nehru. She is the first female Prime Minister of India. So she was born on 19th November 1917 and died on 31st October 1984. So her full name is Indira Priyadarshini Gandhi. She served as a Prime Minister of India from the year 1966 to 1977 and again from 1980 to 1984. Indira Gandhi also played a crucial role in initiating India's first successful nuclear weapon test in 1974. Jawaharlal Nehru was a leading figure in the India movement for independence from British rule. You can go and check in the internet to get more details about Indira Gandhi and her father Pandit Jawaharlal Nehru. This is the letter which was written by Pandit Jawaharlal Nehru to his daughter Indira Gandhi when he was in prison. To give more knowledge to Indira Gandhi, always Pandit Jawaharlal Nehru used to write as a letter to convey his experience so that Indira Gandhi can learn something from the letters. So since he could not meet her personally, so through letters he used to teach Indira Gandhi about life, knowledge and world while he was in the prison. So in this letter, Nehru explains that true knowledge is not found only in the books. It can also be learned from the nature, from the history or from personal experience. So here he gives more details about the history and how the categorization of people happened. There are many letters which he has written. This is one letter which we are going to read today. What we are going to learn after reading this letter? So from history we are going to learn how the categorization of people happened, how different sectors, caste and people were living those days, how we have to read the history. All those details we can take from this letter. So the great people's letter will have in-depth details to think differently. So by reading such letters we can gain more knowledge. You can take this as an inspiration to read great people's letter. Knowledge is gained not only from the books but also through the experience, through the letters of such great peoples we can gain knowledge. And the true knowledge is that which inspires us to think and understand better. We should always try to learn new things. We should always follow the path of truth and honesty, and nature and history are both our teachers. So we should be ready to learn from nature and also from the history. He is Pandit Jawaharlal Nehru. He writes letter when he was in prison. So this is Indira Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru together. Now let's read the lesson to understand further what father wants to convey to his daughter Indira Gandhi through this letter.
प्रिय इंदिरा, so he is addressing as dear इंदिरा. So लड़के लड़कियों और सयानों को भी इतिहास अक्सर एक अजीब ढंग से पढ़ाया जाता है. So for the boys, for the girls and for the adults, सयानों ना for adults, often thought history in a strange way. டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு முறையில் தான் ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம பாய்ஸ்க்கு கேர்ள்ஸ்க்கு अडल्ट्सக்கு சொல்கிறோம். उन्हें राजाओं और दूसरे आदमियों इंसानों के अर्थ में के नाम और लड़ाइयों की तारीखें याद करनी पड़ती है. सो व्हाट वी डू इन द हिस्ट्री, वी memorize the dates of battles, the king and other people, right? So we have been taught history in a very strange way to memorize the names of the king, the other people on the dates of battles. तारीख ना डेट, லடாயோனா பேட்டில். ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டில்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதும் கிங்ஸோட பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு हिस्ट्री சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. लेकिन दरअसल इतिहास लड़ाइयों का या थोड़े से राजाओं या सेनापतियों का नाम ही नहीं. But history isn't really about the battles or the name of few kings or the generals. Senapati is the one who leads the soldiers, right? அந்த சேனாபதி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதோ இல்லை ராஜா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதோ बैटल्स பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டுமே हिस्ट्री கிடையாது. इतिहास का काम ये है कि हमें किसी मुल्क के आदमियों का हाल बताए कि वे किस तरह रहते थे, क्या करते थे और क्या सोचते थे, किस बात से उन्हें खुशी होती थी, किस बात से रंज होता था, उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आई और उन लोगों ने कैसे उन पर काबू पाया. So usually the purpose of the history is to tell us about the people of the country. And the country இருக்க people பற்றி நம்மளுக்கு சொல்லணும். What they have to tell? हाल बता means how the condition was. Like किस तरह रहते थे, எப்படி இருப்பாங்க, எப்படி வாழ்ந்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க, what they used to think, என்னெல்லாம் யோசிச்சாங்க, எதை பார்த்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வரும், what made them feel happy, किस बात से रंज होते थे, what made them feel sad, रंजना sad. ஸோ எந்த விஷயம் அவங்களை சேடாக வச்சுக்கிச்சு, எந்த விஷயம் அவங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிச்சு, என்ன வேலை பண்ணாங்க, எப்படி வாழ்ந்தாங்க, அதெல்லாம் தான் ஹிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு சொல்லணும் இல்லையா. அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் கஷ்டம் வந்துச்சு, வாட் डिफ़िकल्टीज दे फेस्ड, कठिनाइयाना डिफ़िकल्टीज, और उन लोगों ने कैसे उन पर काबू पाया. ஸோ எப்படி அவங்க அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸை ஓவர் கம் பண்ணாங்க, காபுனா எப்படி அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டாங்க, அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ்லேருந்து ஹவு दे ओवर केम. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு हिस्ट्री சொல்லணும். अगर हम इतिहास को इस तरीके से पढ़े तो हमें उससे बहुत सी बातें मालूम होगी. सो इफ़ यू आर गोइंग टू रीड हिस्ट्री इन दिस वे देन वी कैन लर्न मेनी थिंग्स, राइट. ஸோ தரீக்கேனா இந்த மெத்தடில் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை படித்தோன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். मालूम होगी ना, वी कैन नो. अगर उसी तरह की कोई कठिनाई या आफत हमारे सामने आए तो इतिहास के जानने से हम उस पर विजय पा सकते हैं. सो इफ़ यू हैव टू फेस सच सिमिलर डिफ़िकल्टीज और डिसास्टर, ஸோ ஆஃபத்னா டிசாஸ்டர், கட்டினாயினா டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டியோ இல்லை டிசாஸ்டர் நம்ம முன்னாடி வரும்போது இந்த ஹிஸ்ட்ரி கேன் ஹெல்ப் அஸ் ஹவு வி கேன் ஓவர் கம் இட். ஸோ அதில் எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை படிச்சிருந்தோம்னா we will be able to easily overcome such disaster or difficulties from their experience. पुराने ज़माने का हाल पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि लोगों की हालत पहले से अच्छी है या ख़राब, उन्होंने कुछ तरक्की की या नहीं. ஸோ இப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி ஸ்டடிங் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ் டெல்ஸ் அஸ் வெதர் பீப்புள்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் பெட்டர் ஆர் வேர்சன் தென் பிஃபோர். முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ இருக்க பீப்புள் நல்லா இருக்காங்களா இல்லை வேர்சன் ஆகிடுச்சா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். whether they have really made some progress, தருக்கினா ப்ரோக்ரஸ் பண்ணியிருக்குமா இல்லையா லைஃப்பில், ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பில் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிருக்கா இல்லையான்றது ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தாவே நம்மளுக்கு தெரியணும். அந்த காலத்தில் இருந்த பீப்புள் பற்றி தெரியும் போது இப்போ இருக்க பீப்புள் பெட்டராக இருக்காங்களா இல்லை வேர்சனாக இருக்காங்களான்ற விஷயம் தெரியும். ஸோ we can know how the condition of the people are now, whether they are good, they are bad, or whether they have really progressed or not. So this is what the history has to give us. ये सच है कि हमें पुराने ज़माने के मर्दों और औरतों के चरित्र से कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए. So it is very true that we should learn some lessons from the character of men and women of old times. So old time, पुराने ज़माना அந்த காலத்தில் old timeல இருந்த மர்தோனா men, औरतोना விமன். ஸோ இந்த விமன் அண்ட் உமன் கிட்ட இருக்கிற அவங்களோட கேரக்டர், சரித்திரனா அந்த கேரக்டர்லேருந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று கற்றுக்கணும். बिकॉज दे हैड गुड वैल्यूज दोस डेज, राइट. लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि पुराने ज़माने में भिन्न भिन्न जाति के आदमियों का क्या हाल था. एंड ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड
what was the condition of people of different castes in old times. ஸோ பின் ஜாத்தினா டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்டில் இருக்க பீப்புளோட கண்டிஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்போது அப்படின்றதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ லெட்டர் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அஸ் த டீட்டெயில்ஸ் ஹவு த கேட்டகரைசேஷன் ஆஃப் பீப்புள் हैपेंड. ओके, मैं तुम्हें बहुत से खत लिख चुका हूँ. सो आई हैव रिटन मैनी लेटर्स टू यू. ये 24वां खत है एंड दिस इज़ 24th लेटर. लेकिन अब तक हमने बहुत पुराने ज़माने की ही चर्चा की है जिसके बारे में हमें थोड़ी सी बातें मालूम है. So far we have been talking about the very old fashioned things. So பழைய காலத்தில் நடந்த விஷயங்கள் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். சர்ச்சானா டிஸ்கஸ். So this is 24th letter which he is writing. In those letters and all what they have discussed, they have been discussing about the old things, right? Ancient time நடந்தது பற்றி தான் நம்ம பேசியிருக்கோம். which we know only little. ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் डिस्कशन நம்ம பண்ணியிருக்கோம். எதை பற்றி? ஏன்ஷியன்ட் டைம் பற்றி. इसे हम इतिहास नहीं कह सकते, ஆனால் இதெல்லாம் हिस्ट्री கிடையாது. वी कैनॉट कॉल दिस एज ए हिस्ट्री. हम इसे इतिहास की शुरुआत या इतिहास का उदय कह सकते हैं. वी कैन से दैट इट इज़ बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री और डॉन ऑफ द हिस्ट्री. ஸோ யூ கேன் கால் இட் த பிகினிங் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி பிகாஸ் இப்போ தான் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. உதயனா इट इज़ राइजिंग. ओके, ऑन ऑफ हिस्ट्री. जल्दी हम बाद के ज़माने का जिक्र करेंगे. सो लेटर ऑन soon we will mention the later era. ஸோ ஹிஸ்ட்ரிக்கு அப்புறம் இருந்த அந்த ஹிஸ்ட்ரி பற்றி இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எரா பற்றி நம்ம அப்புறமா பேசுவோம். ஜிக்ரு கரேங்க மீன்ஸ் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட் लेटर. विल मेंशन अबाउट दैट लेटर. जिससे हम ज़्यादा वाकिफ़ हैं, विच वी आर मोर फेमिलियर. ஸோ ஹிஸ்ட்ரி பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது என்ன நடந்துச்சுன்னு, தெரிஞ்சது கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இருக்க எரா பற்றி மென்ஷன் இட் லேட்டர் விச் வி ஆர் மோர் ஃபெமிலியர். அதை பற்றி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கு. वाकिफ़ है मीन्स फेमिलियर, जिसे ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, विच कैन बी सेड टू बी हिस्टोरिकल पीरियड. उस पुरानी सभ्यता का जिक्र छेड़ने से पहले आओ. सो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द ओल्ड सिविलाइजेशन, ஸோ ஏன்ஷியன்ட் சிவிலைசேஷனை டச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி लेट मी टेल यू समथिंग அப்படின்றாரு. पहले आओ हम उस पर फिर एक निगाह डालें और इसका पता लगाएं कि उस ज़माने में आदमियों की कौन कौन से किस्में थी. सो लेट्स टेक ए लुक एट इट अगेन एंड फाइंड आउट what type of people exist in that era. ஸோ என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் பீப்புள், கிஸ்மேனா டைப்ஸ். ஸோ என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் பீப்புள் எல்லாம் ஏஷியன் சிவிலைசேஷனில் இருந்தாங்க அப்படின்றது we will discuss. So this letter is going to give more details about the categorization of the people. ஸோ என்ன மாதிரி types of people lived in a society அப்படின்றது தான் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க. हम ये पहले देख चुके हैं कि पुराने जातियों के आदमियों ने तरह तरह के काम करने शुरू किए. सो वी ऑलरेडी सीन. सो இதுக்கு முன்னாடி இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் they have discussed that people from old caste began to perform different types of work. நிறைய டிஃப்ரெண்டான ஒர்க்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்டில் இருக்க பீப்புள். काम या पेशों का बंटवारा हो गया. सो द वर्क और द प्रोफेशन बिकेम डिवाइडेड. ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷன் இவங்க தான் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒர்க்கை இவங்க தான் பண்ணணுன்றது கேட்டகரைசேஷன் ஆயிடுச்சு, டிவிஷன் ஆயிடுச்சு. பட்டுவாரானா டிவிஷன். ஸோ division of people has happened who has to do which kind of work or profession. पेशे ना प्रोफेशन, काम ना वर्क. हमने ये भी देखा है कि जाति के सरपंच या सरगाना ने अपने परिवार को दूसरों से अलग कर लिया और काम का इंतज़ाम करने लगा. So we have also seen that the chieftain or the leader. So सरपंच is the chief of the 5 villages or sargana caste or leader இருப்பார்ல, has separated his family from others and began to organize the work. ஸோ அவங்க ஃபேமிலியை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன ஒர்க்கு கொடுக்கணுன்றது ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஹூ த லீடர்ஸ் ஆர் த सरपंच. वह ऊंचे दर्जे का आदमी बन बैठा. वह इज द प्रोनाउन यूज्ड फॉर दिस सरपंच और द सरगान हु इज ऑर्गेनाइजिंग द वर्क. सो ही बिकेम एन मैन ऑफ हायर स्टेटस. सो ऊंचे दर्जे ना हाई स्टेटस वाला पर्सन आइटा. या यूँ समझ लो कि उसका परिवार और उनसे ऊंचे दर्जे में आ गया. और यू कैन ऑल्सो टेल दैट हिज फैमिली बिकेम हायर स्टेटस देन अदर्स. மற்ற ஃபேமிலி கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்களோட फैमिली became a higher status because they are organizing the work. इस तरफ आदमियों के 2 दर्जे हो गए. So that's 2 classes of people emerge. First ரெண்டு class who is organizing the work, the other is doing the work. So 2 दर्जे ना 2 class. So 2 classes as emerged. एक the first one, एक
इंतज़ाम करता है. So one who organizes, who arrange பண்ணுறவங்க. इंतज़ामना who arranges, arrangement பார்த்துக்கிறவங்க. और हुकुम देता है और give orders. So இதை நீ பண்ணு, இதை நான் பண்ணுறேன், இதை அவங்க பண்ணட்டும். Like that they arrangementsயும் orders பண்ணுறவங்க one class of people. और दूसरा असली काम करता है and the other is the one who is really working. So actual work பண்ணுறவங்க second category. So the first category of the people is the one who arranges and gives the order, and the second class of the people is that who is really doing the actual work. So அந்த work பண்ணுற people. और ये तो जाहिर है कि इंतज़ाम करने वाले दर्जे का इख्तियार ज़्यादा था और इसके ज़ोर से उन्होंने वह सब चीज़ें ले ली जिन पर वह हाथ बढ़ा सके. So now it is very obvious. So जाहिर ना இது obvious है पर நம்மளுக்கு தெரியும்ல, who has the power they will be taking things as per their need. So it is obvious that the managerial class, इंतज़ाम करने वाला means who does the arrangements, so who is managing. So the managerial class had greater authority. So इख्तियार is authority. So they had greater authority. Through their power they seized everything they could lay their hands on. So எதுலெல்லாம் அவங்க கை வைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் அவங்களுதுன்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. They started to seize the things. So அவங்களுக்குன்னு எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க எதுலெல்லாம் அவங்க கை வைக்க முடியுமோ. So सब चीज़ें ले ली. So எல்லா பொருளும் they have taken where all they can lay their hands. So எங்கெல்லாம் கை வைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் அவங்களுதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க. वह ज़्यादा मालदार हो गए. Now they have more things. So they became very wealthy. और काम करने वालों की कमाई को दिन दिन ज़्यादा हड़पने लगे. And the people who are really working, their earnings have been taken up. So அவங்க கிட்ட இருந்து காசை கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நிறைய இவங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So the two class emerge ஆயிடுச்சு. One who is giving the orders and doing the arrangements. The other class is who is actually working. So since they have the power, they have the authority, what they started to seize everything and wherever they can, and they became more wealthy. And the worker oda kaasa earnings लेंदे they were taking more money also from them. इसी तरह जो जो काम की बांट होती गई और दर्जे पैदा होते गए. So in this way as the work was divided the classes emerged. So ஒரு work பண்ணுறவங்கள ஒரு classல கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. So राजा और उसका परिवार तो था ही, उसके दरबारी भी पैदा हो गए. So the king and his family was already there. Beside the king and his family there are also his courtiers. So darbari is the people who are working in the royal courts. So அவங்களுக்கும் நிறைய classification வந்துடுச்சு. वे मुल्क का इंतज़ाम करते थे और दुश्मनों से उसकी हिफाजत करते थे. वे आमतौर पर कोई दूसरा काम ना करते थे. So they manage the country. So country manage பண்ணுவாங்க. So मुल्क ना country, इंतज़ामना they used to do the arrangements to defend the country. So country protect பண்ணணும் enemies கிட்ட இருந்து அந்த வேலையெல்லாம் அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. So defending the country from the enemies. Ifazatna they would be taking care of. आमतौर पर generally they won't do any other work. So there were people who used to only do the work of defending the country from enemies, and generally they will not do any other work. So அந்த மாதிரி class of people also has emerged now. मंदिरों के पुजारियों और नौकरों का एक दूसरा दर्जा था. So there was another class where temple priests and servants. So मंदिरों के पुजारी ना the priest who used to do the puja in temples, there was a class for them. And also दूसरा दर्जा था ना नौकरों में the servants उन्होंने क्लास கொடுத்துருந்தாங்க. उस ज़माने में इन लोगों का बहुत रोब दाब था और हम उनका जिक्र फिर करेंगे. So those days these people were considered to be more powerful. And we will discuss about them later again. So அவங்கள பற்றி நம்ம அப்புறமா பேசுவோம். But you just understand that the priests and the servants were two other different class, and these people held considerable power. ஒரு considerable power அவங்க வச்சுருந்தாங்க. And அவங்கள பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசலாம். जिक्र करेंगे means I will mention about them later. Discuss about them later. तीसरा दर्जा व्यापारियों का था. व्यापारी means the merchants who used to do the trading. So the third category was of merchants. So merchants என்ன பண்ணுவாங்க, they will be buying things and selling from one place to the other place, right? எங்கே கம்மியாக கிடைக்குதோ அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, இன்னொரு பிளேஸ்க்கு இல்லாத இடத்துல கொண்டு போய் அதை விற்பாங்க. ये वे सौदागर लोग थे जो एक मुल्क का माल दूसरे मुल्क में ले जाते थे. So these were the traders. सौदागर ना traders who used to take the goods from one country to another.
for the selling and buying. माल खरीदते थे, बेचते थे और दुकानें खोलते थे. So they, what kind of work they used to do? This merchant category, they will be buying the things from one country and will be selling in another country. So they'll be bringing the things, they'll be selling the things and opening the shops. So खरीदते थे ना, வாங்குவாங்க, விற்பாங்க, கடை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. So which class it is? व्यापारियों ना, merchants. चौथा क्लास कारीगरों का था. The fourth category consisted of artisans. So कारीगरों who used to do handmade crafts. So handmade products பண்ணுறவங்க எல்லாமே कारीगर சொல்லுவாங்க, जो हर एक किस्म के चीज़ें बनाते हैं, who used to produce all kinds of goods. According to the need, they will be making different things. सूत काटते हैं, so they used to do spinning. कपड़े बुनते हैं, they will be weaving the cloth. मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, they will be making the vessels using the mud, pottery. पीतल के बर्तन गाड़ते हैं, so they will be hammering the bronze. So bronze में they will make the vessels. सोने और हाथी दांत के चीज़ें बनाते हैं, they will be crafting the gold and ivory. So யானையோட தந்தம் இருக்கு இல்லையா, ivory, அது மூலமாகவும் they used to craft things. So they will be making things out of gold and ivory. और बहुत से और काम करते थे, and many other occupations also they used to do. So whatever is need, they will be making from different things. ये लोग अक्सर शहरों में या शहरों के नज़दीक रहते थे. So ये is the pronoun used for the कारीगरों. The artisans இருப்பாங்கல்ல, அவங்க mostly where they used to live, they used to live near the cities. शहरों ना cities और nearby to the cities they used to live. लेकिन बहुत से देहातों में भी बसे हुए थे, and many people lived in countryside also. So देहातों ना countryside. So the artisans used to live in the cities or nearby to cities, and most also lived in the countryside. सबसे निचला दर्जा उन किसानों और मजदूरों का था. So the last lowest category was considered to be peasants and laborers. So किसानों ना peasants who used to do the farming, and मजदूरों ना labor, जो खेतों में या शहरों में काम करते थे, who used to work in the fields or in the cities. इस दर्जे में सबसे ज़्यादा आदमी था. So इस दर्जे ना, in the category ला, in the class ला, the largest number of people were men. और सभी दर्जे के लोग उन्हीं पर दांत लगाए रहते थे. And all other class people which we saw below, all those class people look down on them only. அவங்கள தான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த லோவஸ்ட் கேட்டகரியில் இருக்க மென்னை தான் இவங்க எல்லாருமே டார்கெட் பண்ணுவாங்க. और उनसे कुछ ना कुछ एंटते रहते थे, and from them they used to extort something from them. ஸோ ஏதாச்சும் அவங்க கிட்டேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. All the other category of people used to get more things from this low category, who are men. LN10 is extorted. So तुम्हारा पिता Jawaharlal. So your father Jawaharlal. So here we have seen the different categories which he is explaining. The first is the two categories which evolved, right? One who gives the order and the other who does the work. Then based upon the work, the categorization and divisions has emerged. So apart from kings and family, there were also courtiers who used to manage the country, who used to protect the country from enemies, and they don't do any other work apart from this. And there were other class of temples, priests and servants who had a considerable power. And the third category were merchants who used to do the trades, and they used to buy, they used to sell and open shop. And the fourth category were artisans who used to produce all kinds of goods, like they used to spin, they used to weave, they make a pottery, they will be hammering bronze, they used to craft from gold and ivory, and many other occupations they used to do. And they mostly lived in the cities or nearby to cities or in the countryside. And the lowest class was the peasants and laborers who used to work in the fields or in the city, and this class considered the largest number of men, and people from all other classes looked down on them and extorted something from them. So this is how the categorization of people happened in the society, which we have to learn from the history. I hope you have understood the lesson. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section. I surely reply back. Thank you, students.